So we were discussing about cybersecurity threats. So we are done with the virus, worms, spyware, and today we'll discuss about something Trojan horse. Trojan horse. Trojan horse, it's a program. Can you hear me? Heather, जी सर। Hassan, Uzaib. Okay. So Trojan horse, it's a program that pretends or disguised as a legitimate software. But in fact, it's a malicious code embedded within it, right? For example, there is a software you have installed, and this Trojan horse program that comes from a source, say for example, email. ईमेल के थ्रू ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो गया, राइट? And software, the purpose of that Trojan horse is to pretend कि यार I am the legitimate part of this software, legitimate or valid part of this software. In fact, this program is not valid, right? So, what is the purpose of Trojan horse? बेटा ट्रोजन हॉर्स जो होता है ना, द एम इज टू get gather the information, number one, and number two, second one is to definitely harm the interest of the victim by stealing information for example, username, passwords, or debit card, credit card information, etc. Clear? So there is a difference. बेटा ये तमाम जो मोस्ट 99% जो होते हैं आपके जो मेलवेयर्स होते हैं दैट कम्स थ्रू योर ईमेल्स, राइट? इज दैट क्लियर, हैदर? जी सर। Okay. Email means के the email look likes a legitimate email, and user that email forces the user to accept or open the link of the user. So when it is done, or the second thing is when the user access some infested website means, for example, like HTTP, rather HTTPS. It's not secured, right? This one is secured. So, and the third one is when you scan the website through QR codes, even then, if the website is infected with the viruses and you unconsciously download it in your device, then what happens? Then it starts disturbing your device, and we can say it starts harming the computer and computer's interest, right? User interest. For example, why we call it a dangerous one? Because Trojan horse
Trojan horse, come on, but a Trojan horse can plant a ransomware and it can plant spyware in computer, right? So you came late, so let me revise. Trojan horse, beta, it's a program that pretends or that pretends I am the legitimate or valid part of this software. It embedded with the software, it disguised itself as a legitimate software, but in fact, that is very dangerous. The purpose is to harm the computer, to get the computer identity, computer user identity, its details, and it can delete the data. It can do a lot of things with your computer, right? The trick is that is very technical. Most of the viruses, malwares, trojans, they comes from the source that is email. ठीक हो गया? When you click the email, so it look like legitimate, लेकिन जब आप उसे क्लिक करते हैं तो ये आपको इंस्टॉल कर देता है. और द सेकंड थिंग इज, से फॉर एग्जांपल नाउअडेज हम मोबाइल यूज करते हैं, राइट? सो इफ वी स्कैन द वेबसाइट थ्रू QR code and the website you are scanning, right? If that is an infested website, right? So the code will be downloaded on your device. अब ये जो ट्रोजन हॉर्स है, इट कैन प्लांट स्पाईवेयर ऑन योर कंप्यूटर और रैंसमवेयर. स्पाईवेयर को द अदर नेम ऑफ इट इज की लॉगिंग सॉफ्टवेयर. We had a long discussion about this one, right? Key logging, that watches or monitors the keys of your keyboard, and log will be relayed back to the creator of the program, right? So it matches the pattern and find out the information about your username, password, debit card, etc. Whereas ransomware, but this is the very dangerous ransomware. Ransomware means, अच्छा, before I tell you about ransomware, ट्रोजन हॉर्स का मैं जरा आपको एटीट्यूड बताता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, a window appears in front of you saying that your computer seems to be infected with a virus. You need to scan it now. That is the message normally comes from the spyware, sorry, Trojan horse, right? आपने क्या किया है? As soon as you press OK, the damage has been done because it's a Trojan horse. जब आप इसे OK कर देते हैं ना, that needs your actually permission and you initiated the program. आपने ट्रिगर कर दिया उसको. अब ट्रोजन हॉर्स जो है ना, वो अब अपनी मर्जी से प्ले करेगा, राइट? तो दैट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक स्पाईवेयर, मैंने बताया था आपको. एंड रैंसमवेयर में फॉर एग्जांपल it locks or encrypt the drives of your computer, PC. Trojan horse can perform these things as well, right? ठीक है? Just a second. एक सेकंड, मैं जरा लेट मी फिनिश दिस वन, फिर मैं आई टेक योर क्वेश्चन. अच्छा, रैंसमवेयर में बेटा फॉर एग्जांपल यू हैव SSD, ये आपकी C ड्राइव है, दिस इज योर D, एंड से फॉर एग्जांपल वी हैव ओनली 2 ड्राइव्स, राइट? सो we have windows in C drive. Say for example we have a lot of data. Say for example my projects, ये एक folder है, and we have multiple folders, right? Important folders. अब डी ड्राइव जो है ना, ये आपकी वो एनक्रिप्ट कर देता है, मींस के दैट इज लॉक्ड. whenever you start your computer and tries to open the D drive, it asks you for the money. कहता प्लीज पे $500 ऑन दिस वॉलेट, एंड वो आपको मेक श्योर करता है यू हैव दिस डेटा
ऑन योर ड्राइव, वो आपको पूरे फोल्डर एक वो सैंपल डेटा देता है कि ये वाले आपके डेटा है, सो यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस डेटा आफ्टर पेइंग दिस मनी, राइट? रैंसमवेयर, बिकॉज इट्स आस्किंग फॉर द मनी। हमारे सर थे एक यहीं पर कॉलेज में, आपको बताया था ना मैंने। तो अनकॉन्शियसली आई डोंट नो, बट ही टोल्ड मी के यार जस्ट आई गॉट दिस ट्रोजन हॉर्स, so he's asking me $1,000. Fortunately, he had like the backups of his projects and all, ये पेपर्स वगैरह वट एवर कॉलेज के थे। अब आप पूछेंगे कौन थे, मैं नहीं बताऊँ। ओके, ठीक हो गया। तो ransomware इसका the alternate method is to, if you have the backup, then you can reinstall the Windows, format them, reinstall the Windows, number one. If you do not take the preventives, right? Reinstall, or you need to take the backup of your data, say for example bi-weekly, bi-monthly, monthly, that up to you, right? Up, you can place your data on cloud as well. Atif, clear? Yeah. यहाँ तक ठीक है? Okay. So ransomware में when you pay the money, normally they ask you to pay in the Bitcoin or some other cryptocurrency account, right? ताकि वो से वो लोकेट ना कर सके। ओके, तो अच्छा, इसको आप कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बेटा? इससे आपने क्या करना है, यू शुड हैव एंटी अपडेटेड एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। एंटी अपडेट योर एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर, यस, दैट फॉर एवरीथिंग। जब मैं कहता हूं ना मेलवेयर, मेलवेयर मीन्स के तमाम थ्रेड जो है ना ऑलमोस्ट, तो इट शुड बी ए लाइसेंस्ड वन, updated anti-malware software. And the second thing is you should always turn on your firewall. Clear? Now, Hanan, you have a question. जी, क्या कह रहे हो? वायरस जो होता है उसका मेन पर्पस जो होता है, आइडेंटिटी थेफ्ट भी होता है। दैट स्लोज डाउन योर कंप्यूटर, इट कैन डिलीट द ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, दैट कैन अनस्टेबल योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इसके पर्पस होते हैं। ठीक हो गया? worm worm looks the vulnerabilities of the computer, the weak points of the operating systems. For example, you turn off firewall and you let the ports of the computer open for everyone, तो वो वहां से they get into your computer system, right? ये चीजें हो जाती हैं। Is that clear, Heather? जी सर। स्पाईवेयर जो होता है ना, स्पाइंग करना, स्पाइंग मीन्स यू नो इट, राइट? स्पाईवेयर, if that software is installed on your computer, whatever you do with your computer, that information will be sent to the creator of that programmer. Programmer means cyber criminal, जो कि हैकर होता है, राइट? सोर्स ही होगा ना वो। नॉर्मली ऐसे नहीं होता है कि अपना कोड वो दे देते हैं किसी को, नॉर्मली होता नहीं है, ठीक है? तो अगर ये इस तरह की चीज है, फिर वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं फॉर एवरीवन, नॉट फॉर वन। ठीक हो गया? सो वी डिस्कस अबाउट ट्रोजन, वी डिस्कस अबाउट वर्म, वायरस, ransomware. Another one is that is very irritating, and you know ke I'm talking about adware. Yes, adware, this is the program, least dangerous program, least dangerous programs. But that irritates a user a lot. Like you are in the middle of something and you are doing very important task, it immediately appears on your screen, right? कोई एडवर्टाइजमेंट आ रही है, राइट?
तो इसी तरह के वो एड्स, अननेसेसरी एड्स जो हैं वो आपके कंप्यूटर पे आने लग जाते हैं। यू स्टार्ट टू यू आर लुकिंग फॉर सम वेबसाइट एडवेयर में दैट ऑटोमेटिकली सेट बाय डिफॉल्ट पेज ऑन इट्स ओन पेज, राइट। अगर आप लिखते हैं google.com, ये उसको चेंज कर देता है। से फॉर एग्जांपल, इफ यू कैन सी दिस माय ओपरा ब्राउजर, यस, तो दिस इज द पेज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन। ये होम आ गया हमारे पास, एंड आई हैव स्पीड डायल, ये जितने भी हमारे पास देख रहे हो आप इसे ब्राउजर पर, एंड द सर्च विद गूगल आई कैन सर्च। लेकिन जब मैं इसे ओपन करता हूं एंड आई हैव द एडवेयर इन माय कंप्यूटर, देन दैट विल टेक मी टू सम अदर वेबसाइट। वो अपना होम पेज दूसरा बना देते हैं, राइट। दोबारा बोलें। हाँ, वो अपने अपने होम पेज पे ले जाएगी, अपना जो उन्होंने रीडायरेक्ट किया हुआ है उस पेज पर, राइट। और इसका बेटा एक very disadvantage of this one is that is very hard to find out ke it's a dangerous program or not, because these are the ads. Sometimes antivirus jo hote hain na, they are not able to find that it's harmful for the computer, right? हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, you can update your browser, you can update your browser ब्राउजर। अब यहां पर आपको आपके जो पॉपअप्स होंगे, पॉपअप्स विल बी ब्लॉक्ड, जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं, राइट। पॉपअप्स विल बी ब्लॉक्ड ऑटोमेटिकली, एंड एंटी मैलवेयर, एंटी मैलवेयर भी आपका अपडेट होना चाहिए। हैदर, क्लियर? जी सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। एज यू से। ओके बेटा, वी हैव फिशिंग। कम ऑन, क्या खुद लिए फिशिंग? बेटा, फिशिंग जो होती है नॉर्मली, दिस इज डन बाय sending emails to multiple users. Come on, multiple users. ओके, ये ईमेल में क्या होता है बेटा? ईमेल जस्ट लुक लाइक, ईमेल जो है ना, इट लुक लाइक लेजिटिमेट ईमेल, लेजिटिमेट ईमेल। Legitimate email means, for example, my address is, say, for example, my email is mirza.asim@gmail.com, right? आपके पास ईमेल आएगी, because you are very well aware of these threats, so you can identify this. लेकिन the people who doesn't know, non technical, उनके पास बेटा ईमेल आती है ना, saying that this email came from mirza.asim@hkbank.in,
HK समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया। आप कहेंगे यार ये तो सर हैं। आप इमीडिएटली क्या करते हो, यू जस्ट क्लिक द लिंक अनकॉन्शियसली। समटाइम्स हो जाता है इस तरह, समटाइम हो जाता है इसमें, सो नो नीड टू वरी, लेकिन आपको केयरफुल रहना चाहिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस थिंग। आई डोंट हैव मिजान बैंक अकाउंट, एवरी सेकंड थर्ड डे आई एम गेटिंग द ईमेल फ्रॉम द मिजान बैंक। मैं भी दिखा देता हूँ आपको, राइट। सो दीज आर द स्कैम केम कम्स ऑन डेली बेसिस, राइट। मैं भी दिखाता हूँ आपको। सो मिर्जा आसिम एट दिस इज, यू जस्ट नीड टू क्लिक दिस थिंग लिंक। आप कहेंगे सर ने भेजा है, ये कोई ठीक होगी। आप इसे क्लिक करते हैं, दैट कोड दैट विल टेक यू रीडायरेक्ट ऑन द अदर वेबसाइट, आस्किंग यू, नो दिस इज फिशिंग, आस्किंग यू फॉर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड। जब यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, इट मीन्स के डैमेज हैज बीन डन। तो द पर्पज इज टू स्टील द आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ द यूजर। और क्या हो सकता है, मेन पर्पस ये होता है, आइडेंटिटी होता है, और दैट कैन स्टील अदर इंफॉर्मेशन। क्लियर। लेकिन बेटा एक चीज देखनी है आपने, वेन एवर यू गेट दीज ईमेल्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द ईमेल, सब्जेक्ट ऑफ ईमेल एंड 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 subject of the email and the body of the email. Say for example, body of email saying dear customer, dear Mirza Asim, something like beta. Professionally we don't use this word dear। कंपनी में बेटा डेयर शेयर कुछ भी चीज नहीं होती है, राइट। दे कॉल यू हेलो, हेलो मिस्टर समीत, हेलो मिस्टर इब्राहिम, समथिंग लाइक दैट, राइट। हाय, इस तरह की चीज होती है सैल्यूटेशन में, डेयर वगैरह कुछ नहीं होता, राइट। सो ऑलवेज यू नीड टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, सैल्यूटेशन एंड द बॉडी ऑफ द ईमेल। और यहाँ पे यू कैन फाइंड आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो सकते हैं, देर इज ए पॉसिबिलिटी, राइट। आपको पता चल जाएगा ये फेक ईमेल है, राइट। तो सोर्स इज द सेम ईमेल, ये ईमेल के थ्रू आते हैं, अगेन सेम थिंग, राइट। जस्ट लाइक ट्रोजन हॉर्स वगैरह, बाकी आपके मेलवेयर्स वगैरह होते हैं नॉर्मली जो आते हैं, ठीक है। सो दैट इज फिशिंग। एनी क्वेश्चन। अब बताएं बेटा, फिशिंग से रिलेटेड। यस, अब तब आप इससे कुछ लिखते तो वो भी जाता होगा। ऑफ कोर्स। अच्छा, वो एक माउस मूवी नहीं है, वो डिजिटल माउस। वेरी गुड हनान, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं जाएगा, नो। डिजिटल माउस की तरह से। हाँ, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग कीज, आई एम जस्ट राइटिंग। नो, नहीं। देखो वो आपके कीबोर्ड के नीचे जो सर्किट बोर्ड होता है ना, जब आप उसे प्रेस करते हैं तो वो एक कनेक्शन क्रिएट करता है, विच आइडेंटिफाइज अ पर्टिकुलर नंबर इन द इंडेक्स टेबल। व्हेन यू प्रेस ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज 65 97, जो भी आपने लोअर केस अपर केस है, और वो कन्वर्ट होने के बाद आपको नजर आता है, जो हमने पढ़ा था, राइट। लेकिन आई एम यूजिंग टैब, इसमें वो डिडक्ट नहीं करेगा उसके लिए। आप उसे टाइप करेंगे, आप उसे उस पे लिख ले, वो टाइप पे जाए आप। हाँ, अगर मैं टाइप करने लगा देन दैट इट्स ओके, फिर वो पकड़ लेगा, इट विल बी रिकॉर्डेड। तो अगर मैं कीबोर्ड पे लिख रहा हूं तो भी चलेगा। रिप्लेस मीन्स, सेव करवा दो, सेव करवा के जाएगा। तो इससे क्या होगा, चीज तो वही रहेंगी। और जल्दी
नो मैटर वायरलेस है, एक्सटर्नल है, वट एवर, ऑफ कोर्स, लेकिन करेक्टर्स तो वही है, वैल्यूज वही है उसकी। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज दैट इज फॉर्मिंग। बेटा फॉर्मिंग, एंटी malware, turn on your firewall, close your ports, ये नेटवर्क में फैलता है। देर इज ओनली वन नीड, वन यूजर टू प्रेस द लिंक, ईमेल जो आई है उसे ओपन हो रहा है, वो ऑटोमेटिकली जिस जिस नेटवर्क पे वीकनेसेस होंगी ना, वो वहां पे स्प्रेड हो जाएगा। बेटा फार्मिंग में देर इज ओनली वन डिफरेंस इन फार्मिंग एंड फिशिंग, दैट इज फार्मिंग में कोड इज कोड और प्रोग्राम स्लैश प्रोग्राम that will be installed on users drive। बेटा ईमेल नहीं आती है फार्मिंग में, राइट? अ कोड इज इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है? सो व्हेन यू ट्रिगर, व्हेन यू एन इवेंट हैपेंस, then the rest of the procedure is the same, just like the phishing. That takes you on the fake website asking you for the username and password. पर्पस क्या है? पर्पस इज सेम, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक हो गया? आइडेंटिटी थेफ्ट होगा आपका। और बेटा आगे जो है हमारा फार्मिंग में बेटा एक चीज आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डीएनएस पॉइजनिंग। कैसे पॉइजनिंग होती है, उसे डीएनएस में पॉइजन क्यों करते हैं, दैट इज फार्मिंग में आएगा वो। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह वो कल डिस्कस करते हैं फिर हम, ठीक है? नहीं, दैट्स ऑल फॉर, जस्ट अ सेकंड, क्या चीज बेटा? हाँ वो मैं बताता हूँ। ओके हैदर, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हसन इज अल्लाह हाफिज सर। अमानी इज एब्सेंट, अली हैदर, वेयर इज अली, आतिफ, हसन। ओके ओके ओके, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज।